like sort of high on uh, क्या बोलेंगे, what are those बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स दिए हैं मेरे को, ओपिएट्स दिए हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा हाई हूँ, तो अगर मैं कुछ मचा दूँ तो बस कुछ बुरा मत मानना, ठीक है? Anyhow, jokes apart, uh, but I still thought that obviously let me continue with the session. And in fact, the fact that I had a injury yesterday makes me want to do the session even more to make you guys realize that relax, life बहुत seriously नहीं लेनी होती. Genuinely, life बहुत seriously नहीं लेनी होती. I understand the context of the meeting is to realize the pros and cons of a branch so that you make a proper systematic decision. Okay, this is the branch that I desire, or this is the branch that I desire, or this is what I want to do with my life. But in fact, I would like all of you want to, all of you, would want all of you to take a step back and think that, unfortunately or fortunately, whichever way you want to consider it, life is not a single straight arrow. ठीक है, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे. अब मान लो कल मैं गिर गया था, मेरी आंख एक्चुअली में, आई एम लकी एनफ कि जस्ट अ स्टिच, आई गॉट यू नो, लेट्स से माय आई वाज इंजर्ड, राइट? And I probably, let's say I lost my eyesight or something on those, and let's say I was a surgeon, तो फिर तो कट जाता, है ना? मतलब सिंपल वर्ड्स में यही होता. सो पहली चीज तो मैं यही बोलना चाहूंगा दैट यस, इट्स गुड दैट वी डिस्कस प्रोज एंड कॉन्स रिलेटेड टू एमबीबीएस, लाइक surgery, not surgery, branches and everything, but life is too long and too unpredictable. So the only thing which is predictable in life is what you do out of it. And one thing I want to make you want to make predictable for you guys is to ensure that you keep on having fun at regular intervals. Don't take life too seriously. Nobody is going to get out of it alive. सब मरने वाले हैं एक पॉइंट के दिन के बाद, right? So that's why I told Shubham कि instead of talking about the pros and cons of a branch, हाँ वो भी discuss कर लेंगे, no doubt about that. We will discuss that as well. But let's discuss more कि MBBS में what I feel, I might be wrong also, it's not like I'm 100%, but मेरे को ऐसा लगता है कि versus let's say जैसे like 3 or 4 years back or 5 years back versus current scenario, people have started taking MBBS a little way too seriously and have started taking NEET PG prep also way too seriously, which is good. I'm not saying कि don't पढ़ाई मत करो, मैं खुद बहुत पढ़ाकू बंदा था, but we should always have a balance. It should not be कि मैं सिर्फ पढ़ाई करता था या आप सिर्फ पढ़ाई करो. लाइफ में एक बैलेंस होना चाहिए. लाइफ एनीवे बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, लाइफ एनीवे बहुत छोटी है जिसको कहते हैं, एनीवे वेरी स्मॉल. सो वी शुड ऑलवेज हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस, एंड वर्क लाइफ बैलेंस, स्टडी लाइफ बैलेंस, और वट एवर यू वांट टू कॉल इट. So मेरे the two mantras which I had always to ensure that I had a study life balance was, एक मैं ये बोलता हूँ, what I personally feel is that uh, having a little bit of compartmentalization, and second is going up. Anyone who's in a third or fourth year, उसके लिए मैं स्पेसिफिकली बोलने वाला हूँ थर्ड फोर्थ या सेकेंड ईयर में अगर कोई ज्वाइन करने वाला है, हाउ आई एंश्योर टू हैव अ बैलेंस कि मैं कभी आई डोंट बिकम वेरी टू मच इनटू स्टडीज एंड एवरीथिंग. वाज कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब ये था कि जब पढ़ाई करनी होती थी तो सिर्फ पढ़ाई होती थी, और जो मस्ती करनी होती थी तो सिर्फ मस्ती होती थी. इसके लिए मेरे में हर बार एक, व्हाट आई ऑलवेज यूज्ड टू इंश्योर वाज दैट ऑलमोस्ट ऑलवेज जैसे ही कोई एग्जाम खत्म होता था, बीट मिड सेम, बीट एंड सेम, बीट प्रोफेशनल एग्जाम्स, आई ऑलवेज यूज्ड टू टेक अ ट्रिप. दिस समथिंग व्हिच आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट कि यार start taking trips. These are the days, these 19, 20, 21 years are the days when you will make memories for life with your friends. So please, and having fun is also an active task. It's not a passive task. घर पे बैठ के सो के फन नहीं होता. फन करने के लिए भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो मेहनत भी करो. Like genuinely वो मेहनत भी करो, उसको भी मेहनत मानो, and do that hard work also to enjoy also life. Like genuinely, don't think of it as like a task, but do that task as well. कि every time you have an exam, ensure that you go on a small trip, or you explore a new place, or you hang out with your friends, right? डोंट गेट इन टू द ग्रूव कि आज एग्जाम खत्म हुआ, अब मैं अगले एग्जाम के लिए पढ़ना शुरू कर दूंगा, बिकॉज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एग्जाम्स तो खत्म ही नहीं होने. कल मिड सेम आएगा, उसका एंड सेम आएगा, फिर प्रॉफ आएगा, फिर सेकंड प्रॉफ आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, नीट पीजी आएगा, फिर नीट एसएस आएगा, नीट एसएस के बाद फेलोशिप आएगी, फेलोशिप के बाद यूएस जाने का मन करेगा, यूएसएमएलई आएगा, यूके जाने का मन करेगा, एमआरसीपी आएगा, उसके बाद एग्जाम्स खत्म ही नहीं होने. So don't be in a the rat race is never ending. So it's better to just accept कि एग्जाम्स तो खत्म नहीं होने, बट जो भी एग्जाम होगा उसको मैं एंजॉय जरूर करूंगा. सो आफ्टर एवरी एग्जाम आई ऑलवेज ऑलवेज यूज टू टेक अ ट्रिप. ठीक है कि गोवा का प्लान बनते हैं, बनाओ यार, हाँ जाओ गोवा, घूमने जाओ गोवा, विच एवर प्लेस यू आर, गो गो टू गोवा, गो टू एनी, आई एम प्रीटी श्योर every state that people are from, let's say for example you're from West Bengal,
So go to Bhubaneswar, go to Puri, right? Or go to some beach location. I'm pretty sure there must be some hidden gems in Bengal also. Go to that place. If you've never been, I'm pretty sure there must be some person in Bengal who would have probably never visited Darjeeling also. या सिक्किम नहीं गया होगा. तो वो तो तुम्हारे लिए बहुत ही पास है यार. इट्स अ 200 300 400 rupees bus ride to that place. You can always have cheap hostels to stay at, and you can always make memories and make your MBBS as memorable as possible. That is what I want to tell you guys, right? Especially अपने एग्जाम्स के बाद. दिस वाज अ कंपार्टमेंटलाइजेशन पार्ट कि एग्जाम के टाइम पे एग्जाम की पढ़ाई की और उसके बाद मस्ती मारी, और मस्ती के टाइम पे बिल्कुल नहीं सोचा. द सेकेंड थिंग आई ऑलवेज यूज टू फॉलो टू एंश्योर दैट आई हैड दैट वर्क लाइफ बैलेंस वाज कि this is a very important thing I want to tell you, that burnout is real and you cannot be at your 100% on all the days. Nobody can be on their 100% all the days. So the best method, and this is something which I know that a lot of influencers अपनी पूरी पूरी लाइफ डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं, जिसमें वो दिखा रहे होते हैं कि हम तो हर समय एकदम 100% रहते हैं. एक एक थोड़ा सा एरोगेंट मैं साउंड करूंगा. देखो यार, मेरे को पता है मुझसे बेटर रैंक्स दुनिया में लोगों की, बहुत कम ही लोगों की आई हैं. और मैं खुद बोल रहा हूँ कि इतना कोई हर हर समय 100% उस पे नहीं होता. ठीक है, और मैंने तो कभी बोला भी नहीं अपने चैनल में. जिनकी नहीं आती ना रैंक्स, वही बोल रहे होते हैं चिल्ला चिल्ला के कि वो ऐसे 100% उस पे रह रहे होते हैं. कोई नहीं रह रहा होता. एंड दे आर डूइंग इट बिकॉज फॉर दैट सोशल मीडिया थिंग, एंड दैट्स फाइन. आई एम ओके विद दैट. मेरे को उससे इतना इशू नहीं है. बट डोंट थिंक ऑफ सोशल मीडिया एज अ रियल लाइफ. ठीक है. डोंट बी लाइक कि कोई दूसरा बंदा जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ और वो हर समय 100% पे अपने, नहीं, कोई नहीं है यार. एवरीवन हैज देयर अप्स एंड डाउन्स, एंड वी शुड टेक दोज अप्स एंड डाउन एंड कंटिन्यू विद द लाइफ. लाइफ इज नॉट अबाउट ऑलवेज बीइंग ऑन अ हाई. बिकॉज हर समय हाई पे रहोगे तो फिर लो से पता ही नहीं, यू विल नेवर अगर हर समय हाई पे रहोगे तो लो, व्हेन यू आर एट अ लो, you won't be able to tolerate that low. And be high का मजा भी तो तभी आएगा जब low जाओगे. So you always need that sine wave to be continuing, right. So what I will say is that what I used to follow was कि अगर मान लो 3 महीने बाद एग्जाम है ना, तो मैं तो हर समय ऐसे करता था. पहले महीने रोज, पहले 10 दिन तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करूंगा. उसके अगले 10 दिन पढ़ना शुरू करूंगा. उसके अगले दिन रोज पढ़ना शुरू करूंगा. फिर 2 महीने पहले, अब वो 1 घंटे को 2 घंटे करूंगा. 2 महीने पहले एग्जाम से 2 महीने पहले 2 या 3 घंटे करूंगा. एंड फाइनली एग्जाम से एक महीना पहले प्रॉपरली, हाँ, उस एक महीना में बैठ के आराम से रोज का आई विल ट्राई टू एंश्योर दैट आई स्टडी फॉर 4 to 6 hours ऑन अ डेली बेसिस. एग्जाम ऑब्वियसली एमबीबीएस में आफ्टर योर क्लासेस आर डन यू कांट स्टडी फॉर मोर देन 4, मतलब कोई नहीं पढ़ता यार 10 घंटे. मैंने जिंदगी में कभी एमबीबीएस के बाद, अपनी क्लास के आने के बाद 10 घंटे नहीं पढ़ाई की. नोबडी डज दैट. एग्जाम से जस्ट पहले होती है, 10-15 दिन पहले होती है. But nobody studies 10 hours or 6 hours. And if anybody is portraying that, and I know that social media has amplified that a lot these days also. So I'll be very honest and I'll be very blunt that जो वो दिखा रहे हैं वो झूठ दिखा रहे हैं. That is just for social media. That is just for the online fame that they're having. Nobody does that. Rather be more practical. That हाँ, शुरुआत में मस्ती मारी, 10-15 दिन मस्ती मारी, फिर पढ़ने के ग्रूव में आए, फिर थोड़ा धीरे धीरे और पढ़ाई बिल्ड की, एंड टुवर्ड्स लास्ट 1 मंथ और लास्ट 3 वीक्स बिफोर द एग्जाम, तब यार ना आव देखा ना ताव. देन यू डिड नॉट लुक हियर, डिड नॉट लुक देयर, डिड नॉट लुक एनीवेयर एल्स. देन योर सोल फोकस वाज उस समय मस्ती नहीं मारनी. Don't waste time at that point of time. In the 3 months or 4 months, sorry, 3 weeks or 4 weeks prior to an end sem or a mid sem exam, then don't waste time. Then just hit the library on a regular basis, hit the tables on a regular basis, and study for 4 to 6 hours. This is something which I learned from one of my seniors. I want to take his name, Dr. Ashir Kaul. Right. I always used to see that he was always enjoying life also. मतलब मस्ती भी पूरी मारते थे. And always used to top also यार. मतलब I was always in awe of him, to be very honest. कि how is he doing that? And I knew for a fact that he's not a genius. A lot of people think that people are geniuses and that's why they're able to do it. कि एग्जाम से बस एक हफ्ता पहले पढ़े and then they're still able to top. No. He had this system, and I tried to implement this system for my later exams, and it does work. If you have 2 months for an exam or 2.5 months for exam, 3 months for exam, you can always build it up. शुरुआत में मस्ती ही मारो और उसमें फिर एग्जाम के बारे में मत ही सोचो. ओके. देन पढ़ाई करने के ग्रूव में आओ ताकि यू आर इन द पोजीशन, एंड देन लास्ट 1 मंथ में देन डोंट लुक हेयर एंड देयर. देन बी द मोस्ट डेडिकेटेड स्टूडेंट. जो नीट यूजी में हम लोग स्टूडेंट होते थे ना, कि कुछ नहीं दिख रहा होता था, हमें सिर्फ पढ़ाई दिख रही होती थी. देन बी दैट स्टूडेंट फॉर दैट 1 मंथ. एंड देन अगेन
and keep on enjoying life. So these are my simple two mantras that, because life is too short. I want to say it out loud uh, that a lot of people might be feeling ki, oh, I want to be like, a lot of people keep on telling me that I inspire them, that they want to be someone like me, or they want the achievements inspire them. And I'll tell you that I will happily exchange my life with each and every one of you if I get my father back. At the end of the day, the only thing that matters is your family and your closed ones. And for me, my achievements and everything, they are useless. uh, And I would give them all up in a single second if I get to spend even a single one microsecond more with my father. So value the relationships that you have with your friends and your family. एमबीबीएस होती रहेगी, पढ़ाई करनी है, नो, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई नहीं करनी, वो 1 महीना पहले पढ़नी है और अच्छे से पढ़ना है, उसमें ढंग से पढ़ना है. You have to build your concepts and you have to read good books during that particular period of time. And be regular in studies की शुरुआत में 2-3 हफ्ते के बाद, then you are regular, then you are studying on a daily basis, 1 hour or half an hour or whatever it is. But also ensure that you enjoy your life, है ना? Because बहुत ही छोटी है life and we really don't know how unpredictable life can get. So this is my simple mantra to you guys. Take trips, plan trips, make memories in MBBS, and do this, building up process. It will ensure you have a good work-life balance. Also, you have a good, life outside MBBS also, and it will ensure your MBBS भी अच्छी जाए. The professional success that you guys desire, that also keeps on happening, right? And now coming to the second part. Coming to the part of pediatrics. I'll come to the pediatrics part. What are the pros and cons of pediatrics? First, I'll start with the cons. I'll directly start with first. I'll start with pros. Pros पहले बता देना. Pros is it's a clinical branch, first of all. मतलब for a lot of people who it's really good. Like a lot of people will like pediatrics simply because it's like medicine only. A lot of people like medicine, I know. So मैं pediatrics का वही बताता हूँ कि तुम्हारी जो वो a lot of people want to be Doctor House, right? And that's perfectly fine. हमें diagnostic dilemmas और हमें diagnosis को करने में we really like that. कि oh, some person has come and I want to make a diagnosis and I want to find out what is the cause of that disease and everything. So वो जो diagnostic का कीड़ा होता है ना, that making a diagnosis, investigations coming up and everything, so that thing is properly satisfied by pediatrics, like genuinely properly satisfied. Unlike maybe let's say other जो surgical branches हैं उसमें तो diagnosis हमारे सामने ही होता है, कहीं पे कुछ ना कुछ सिस्टी होगा, कुछ ना कुछ वही होगा, you do a biopsy, उसमें तो that is a different thing. तो वो जो diagnostic कीड़ा होता है medicine pediatrics, they satisfy that a lot. The second pro is obviously it's an end branch. Like I really want to tell it out loud. Although I have done DM, having said that, my wife is not doing DM. Okay. Uh, uh, my wife is not doing any DM, and she's making as much as I make. So pediatrics genuinely is a end branch. Pediatrics genuinely is a end branch. तुम्हें DM की requirement actually में नहीं है. सो दिस इज अ वेरी ह्यूज एडवांटेज इन करंट वर्ल्ड. आई पर्सनली फील कि आपको डीएम नहीं करनी पड़ेगी, आपको एसएस नहीं करनी पड़ेगी. यू आर काइंड ऑफ सेविंग योरसेल्फ अ लिटिल बिट फ्रॉम द रैट रेस. ऑलराइट. द थर्ड एडवांटेज ऑफ pediatrics is it's an OPD based branch, like genuinely, like medicine also, and it doesn't require too much of a huge setup, so you can always start your private practice. And it is something which I would urge everyone who ends up taking pediatrics also, that they should start doing their private practice. And private practice is a financially and professionally also, both ways it is very very lucrative and is very very rewarding also. And the fourth advantage of pediatrics I want to say is that it's not saturated. Like a lot of people keep on saying it's saturated at pediatrics, but actually में pediatrics as an MD pediatrics आप saturated नहीं हो. It's still one of the branches where you will get a job in a tier 1 city also आराम से. This saturation part brings me to the next point. This brings me to the next point of cons of pediatrics. The major con of pediatrics is, although it is not saturated, although, just 1 second, I don't think so I can see the waiting room part. Just 1 second. No, yeah, that's a technical issue. You No, you continue. can continue. I'll do that. Sure. Yeah. So, although pediatrics is not saturated, but it is not a high paying job branch. And listen to these words very, very carefully. Okay.
Saturation, there are two parts to saturation. One part to saturation is that you're not getting a job in a corporate hospital, that you went, did your MD, you did your MS, and you want a job. One part is you're not getting a job, or you're getting a job in a place where you don't want to go to. कि मेरे को दिल्ली में रुकना है, मेरे को दिल्ली में जॉब नहीं मिल रही, मेरे को मथुरा जाना पड़ रहा है, आई एम गोइंग टू सम रियली tier 3 tier 4 मुर्शिदाबाद or something like that. There is one part of that, that you're not getting a job, or you're not getting a job in tier 1 city. Second part of saturation is you're not getting a high paying job. Okay, there are two parts to the saturation. There are certain branches, for example, I would say, उन branches पे नहीं जाते that the people will talk about. There are some certain branches definitely which are saturated to the point that you would not get a job in a tier 1 city. Pediatrics hasn't had that problem. But the second part of the problem of pediatrics, while you will easily find a job, you will always easily find a job, the jobs are not high paying. And high paying किसके कंपैरिजन में नहीं है? किसी के कंपैरिजन में हाई पेइंग नहीं है, नहीं तो ऑब्वियसली आप हाई पेइंग ही बोल सकते हो. दे आर नॉट दैट हाई पेइंग इन कंपैरिजन टू पीपल हु हैव डन देयर डीएम इन अडल्ट ब्रांचेस. People who have done their DM in adult branches. MD medicine के comparison में equivalent ही pay है, but it is less paying as compared to someone who has done a DM in an adult branch. So when people say that pediatrics is a saturated branch or pediatricians don't make money, I feel the comparison is unfair. They're comparing with someone who has done a DM in cardiology or a DM in medical oncology with an MD in pediatrics. That's an unfair comparison. उस comparison में yes, I would say अगर आपने डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी, हेमेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी की हुई है, you'll obviously make more as compared to someone who is simply an MD pediatrics. But एक MD pediatrics का एक बहुत बड़ा फायदा है, आपको डीएम नहीं करनी और आप आराम से प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो. अ कार्डियोलॉजिस्ट कैन नॉट डू अ प्राइवेट प्रैक्टिस. He cannot himself, unless you're super rich, you cannot make up a cath lab yourself. And unless you don't have a cancer hospital, an oncologist cannot practice. A pediatrician has that advantage, that if they start their own private practice, they can easily make as much as someone who's working for a job. So I think a lot of people have this problem कि आपको, you should realize what you want from your life actually. Agar if you want a branch which gives you the opportunity to be employed in a hospital and have a good private practice setup also, pediatrics is the best of both world in that scenario, because you will always have a job, you will always have the opportunity to आपको literally एक table और एक pen चाहिए and you can start with your private practice. You don't require too much of a setup also for pediatrics as a pediatrician. Unlike let's say dermatologist, उनके तो कुछ कुछ procedures होते हैं, pediatrician को तो वो भी नहीं चाहिए, आपको तो literally vaccines चाहिए and you can have your full-fledged proper growing private practice. Unfortunately, what has happened and come to the mind of a lot of young doctors, they have forgotten the art of private practice. All of them are looking for jobs. और फिर जॉब्स, pediatrician को जॉब्स, लाइक आई सेड, जॉब्स भी मिल जाएंगी बट दे वोंट बी हाई पेइंग जॉब्स. कई ब्रांचेस में तो जॉब्स ही मिलनी मुश्किल हो जाएंगी. pediatricians don't have that problem, they will easily find jobs, but they won't be high paying jobs. High paying in what sense? They won't be high paying in comparison to someone who has done a DM, obviously, which I feel is an unfair comparison. But ठीक है, अगर करना भी है तो हाँ, उसमें मैं मानता हूँ that you as a pediatrician what you will make will probably in a job setup, again very highly emphasizing this part, in a job setup in a corporate hospital, a cardiologist will obviously make more than a pediatrician. But if you are a pediatrician who has a private practice, then you are the king of your own time. You are the ruler of your time, and you can as easily private practice में तो sky is the limit. As big as your practice gets and as better as your practice gets, it gets. So I feel people should. I genuinely feel that the young generation has become very accustomed to has become accustomed to the way uh, IITians and they used to think, या engineers used to think कि हम लोग अपनी 4 साल की इंजीनियरिंग करेंगे फिर हम लोग जॉब के लिए लग जाएंगे. और मेरे को लगता है दिस इज द बिगेस्ट disservice to the community of medicine that you can do. We are professionals. We are people who can survive without requiring help of any corporate hospital or anyone else, and we can survive on our own, right? इनफैक्ट जब तुम्हें कोई बताता था फॉर एग्जाम्पल नीट यूजी में, जब मैं कभी बोलता हूँ नीट यूजी में कि इट इज नॉट दैट, मतलब बहुत लंबी जर्नी है एंड समटाइम्स बीइंग अ डॉक्टर, डोंट बी अ डॉक्टर फॉर द मनी एस्पेक्ट ऑफ इट, बिकॉज समटाइम्स यू माइट फील कि दूसरे लोग ज्यादा कमा रहे हैं. तो तब हर बार कोई ना कोई आपको ये बोल देगा, मेरे मेरे कमेंट सेक्शन में कोई 10वीं 11वीं 12वीं साल का बच्चा ये बोल देगा, हमारे छोटे से गांव में एक डॉक्टर बैठता था जो 100 पेशेंट रोज देखता था और वो महीने के 5 लाख रुपए या 20 लाख रुपए छापता था. अगर दैट वाज माय सिंपल क्वेश्चन इज that when does this shift occur? What you that person was saying,
that जो मेरे को कमेंट सेक्शन में that some stupid guy would like मेरे some tier 2 3 टाउन में कोई छापता था पैसे and everything was making a shitload of money. You too can. Why are then you looking for a job? Why then you don't have the conviction to start your own private practice? Sit, wait for that 1 2 years to build that private practice, and then you also will make that shitload of money that you wanted. But then उसमें पापा लोग क्या कहने लगे आते हैं, and then when what people suddenly will be like that after your MBBS or after MD, suddenly like I want to look for a job. I want for to look for a job in a corporate setup, and then when you get a salary of 1.5 lakh rupees per month, then you're suddenly like, oh, MBBS में तो पैसे ही नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं है. Unfortunately, our thinking has unfortunately changed, and a lot of young doctors are very scared of having their own private practice. And I feel that that should change. You should have, especially barring maybe the tier ones, the Kolkata, the Mumbai, the Chennai, and the Bangalore, Hyderabad, and Delhi. इसके अलावा every other city, even cities like Jaipur, Chandigarh, Lucknow, for that matter, Kanpur, or agar, for example, Bengal की मैं बात कर लूँ, Kharagpur, Darjeeling, all these places, instead of trying to get a job in a private sector hospital paying you peanuts, you should try to have your own private practice. And for that private practice part, definitely, almost there are only 2 3 branches which are very easy private practice branches. It's your derma, it's your medicine, it's your pediatrics, and they will never lose their charm. So pediatrics will never lose their charm because it's one of the, मतलब यही 3 ब्रांचेस हैं जिसमें आप प्राइवेट प्रैक्टिस बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हो. You can't start a private practice in surgery. You can't start a private practice in OBGYN easily. You'll need a little bit of setup. You'll need a little bit of conviction. इसमें तो literally कुछ नहीं चाहिए यार. इसमें तो literally you need to get a rent of one room for 5,000 rupees. एक helper रखना है and you can start your private practice. Right? तो ये charm तो pediatrics का कभी, this is a huge pro of pediatrics which people don't realize. Apart from the fact that you don't need to do DM. Alright, you'll always get jobs. अगर तुम्हें लगता है नहीं मेरे को stability चाहिए, you'll always get jobs. But yes, that brings me to the biggest cons of pediatrics. The jobs are not high paying. The jobs are not high paying. उस con के लिए भी मैं एक pro बता सकता हूँ तुम्हें. DM, especially in neonatology and pediatric intensive care, they are very high paying. Okay, pediatrician might not make a lot of money, but as a job part. But neonatologists and intensive care specialists, they also make a lot of money in a job setup also. All right, they make a lot of money in the job setup also. So वो part भी वो है. So I personally feel it's a very good branch. You should take it. One thing I would definitely want to emphasize: don't take it if you want to take it as a second step to medicine. उस सिनेरियो में मैं ये बोलूंगा, you probably might be getting DNB medicine or a medicine at a lower rank college. Medicine करो. Never compromise on the branch that you desire wholeheartedly. But if you are someone who likes pediatrics but as is being told by other people that pediatrics is not a good branch, उसमें मैं बोलूँगा वो गलत बोल रहे हैं. Have the conviction to start a little bit of private practice and you will be that, वो जो हम लोग 10वीं 11वीं 12वीं में बोल रहे थे, looking from that perspective, वो वाला वैसे डॉक्टर बन जाओगे. Have that little bit of conviction and you'll be fine, right? मैं खुद अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाला हूँ विद द नेक्स्ट, बस सोच ही रहा हूँ लाइक कहाँ पे स्टार्ट करूँ. But I also realize after a point of time, it's better to be owner of your own destiny rather than working for some other corporate hospital and contributing to their success. उस मामले में pediatrics is one of the best branches. All right. So yeah, so that's it, and I think I'll take the questions now, Shubham, I think. Yeah, sure. So one of the questions that we have received, how do you proceed on with subjects in respect to clinics in the final year? Like, I think they're asking about the balancing between the theories and the clinic ward rotations that a student अच्छा, has. मेडिसिन चल रही होती है पोस्टिंग और एग्जाम तो किसी और का आ रहा होता है. या श्योर एनफ. सी दैट डिपेंड्स अपॉन, there are 2 parts to it, depending upon which year you are in. So for example, if you're in second and third year, to be very honest, तो मैं तो यही बोलूँगा कि just मतलब ward leave के लिए, even if you prepare for 3 4 days, that's more than enough. Don't take ward leaves too seriously, to be very honest. Whenever the ward leave is going to be there or and posting assessment is going to be there, let's say obs gynae है या medicine है, तो I'm not saying कि साथ में तुम medicine पढ़ते रहो. It's really useless, to be very honest, है ना. You should, if you're in your second and third year, I would rather say focus on the second third year subjects. Path ही पढ़ो, pharma ही पढ़ो, उनको ही रोज पढ़ना है. ठीक है, don't focus too much on ward leave. Ward leave से 2 या 3 दिन पहले give 5 into 3 15 hours probably on the higher side to those ward leaves and you should be fine. Pass हो जाओ, that's more than enough, to be very honest. मैंने अपनी ward leaves पे कोई बहुत ज़्यादा focus नहीं किया था. Having said that, जब final year में ward leaves आती हैं,
उस समय तो अपना शेड्यूल वार्ड लीव के हिसाब से बना लो कि 1 महीना मेडिसिन है, तो इस 1 महीने में मेरी मेडिसिन खत्म होनी चाहिए। मैं मैरो प्रेप जो भी यूज कर रहा हूँ, मैं सारी वीडियोस आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस देख लूंगा, नोट्स पढ़ लूंगा, एंड इस महीने में अलॉन्ग विद वार्ड लीव मैं खत्म करूंगा मेडिसिन। जब ऑब्स गाइनी होगी खत्म करूंगा ऑब्स गाइनी, पीड्स होगी खत्म करूंगा पीड्स। मतलब मैं अगर मैं खुद के लेक्चर्स की फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, सर द काइंड ऑफ लेक्चर्स दैट आई मेड एट डीबीएम से वन, देर अराउंड 35 hours यार, नॉट इवन ह्यूज फ्रैंकली। मतलब मैंने तो आई ट्राई टू इंश्योर दैट इट्स अ गुड मिक्स बिटवीन की फाइनल प्रोफ वालों की भी हेल्प हो जाए, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट्स नॉट समथिंग की रिवाइज ही नहीं हो पाए, राइट? सो आई वुड एक्चुअली से माई लेक्चर्स आर लाइक 35 hours, इवन इन अदर अदर एप्स ऑल्सो दे आर 40-45 hours। तो अगर तुम्हारी 20 दिन की पीडियाट्रिक्स होती है, जैसे एम्स में इफ आई रिमेंबर 20 days यूज्ड टू बी पीडियाट्रिक्स, आई एम प्रीटी श्योर अदर कॉलेजेस विल हैव सिमिलर टाइम पॉइंट। तो 20 days में इवन एट 2 videos ऑन अ डेली बेसिस इफ यू सी ऑफ पीडियाट्रिक्स, राइट, यू विल बी एबल टू फिनिश पीडियाट्रिक्स। तो तुम्हारी एक रीडिंग भी हो जाएगी, साथ में तुम अपना क्लिनिकल पोस्टिंग पढ़ते रहो, ½ an hour टू दैट, तो 2.5 hours ऑन अ डेली बेसिस इन 20 days यू फिनिश योर पीडियाट्रिक्स। व्हाट मोर डू यू वांट, राइट? व्हाट मोर डू यू वांट? तो इस तरीके से करो। सेकंड थर्ड ईयर में आई वुड से दैट डोंट टेक टू मच स्ट्रेस ऑफ क्लिनिकल वार्ड लीव, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 3-4 दिन दो, पास करो, मोर देन एनफ, जेन्युइनली मोर देन एनफ, नोबडी इज गोइंग टू बी। बट फाइनल ईयर में दैट वार्ड लीव एंड दैट टाइम पीरियड दैट यू आर गेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट बिकम्स द टाइम पीरियड टू कंप्लीट दैट सब्जेक्ट। कि मेरी 1 महीने की मेडिसिन लगनी है या 1.5 month की मेडिसिन लगनी है, मेरे को मेडिसिन खत्म करनी है, प्लेन एंड सिंपल। इस 1 महीने में आई एम गोइंग टू गेट डन विद माई नोट्स, आई एम गोइंग टू गेट डन विद माई वार्ड लीव ऑल्सो, एंड देन फुल स्टॉप। एंड देन फिर फाइनली जब सारी वार्ड लीव्स हो जाएंगी जून एंड तक या जुलाई, अपने जुलाई अगस्त एंड तक, उसके बाद मैं रिवाइज मारूंगा फॉर माई प्रोफ्स, है ना? सो दिस इज हाउ आई फील यू शुड गो अबाउट। वेरी वेल सेड भैया। आई थिंक दिस काइंड ऑफ आंसर्स 2 or 3 ऑफ द क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन जो मिला है, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन प्रेप फॉर नीट पीजी। All right. So I am personally a believer that you should, मतलब सिर्फ खुद से एक simple, just ask a simple thing to yourself that whether you are a dedicated student or not. Like a very simple question to yourself. अगर तुम्हें पता है कि तुम डेडिकेटेड नहीं हो, तो खरीद लो वो डेडिकेशन और ऑफलाइन ज्वाइन कर लो। Like a very genuine thing I would simply say is online, although as good as it sounds as online, देखो तुम चाहे डांस ज्वाइन करो या भाटिया ज्वाइन करो, तुम्हें ऑनलाइन का तो एक्सेस मिल ही जाएगा, है ना? तो तुम्हें तो मतलब ऑफलाइन इज बेसिकली ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। First of all, let's put it this way. So you are asking whether should I join online or whether should I join online plus offline. Let's put it this way. ऐसा तो कभी नहीं होने वाला, तुम ऑफलाइन जाओगे तो तुम्हें ऑनलाइन का एक्सेस नहीं मिलेगा। डांस जाओगे तुम्हें डांस में भी ऑफलाइन ऑनलाइन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलेगा, तुम भाटिया जाओगे तुम्हें डीबीएम से वन को एक्सेस मिलेगा। मैं तुमसे सिंपली ये कहने वाला हूँ कि ऑफलाइन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि यार तुम्हारी एक बहुत बड़ा ना मेंटल स्पेस खत्म कर दिया ऑफलाइन ने। ऑफलाइन ने एक बहुत बड़ा मेंटल स्पेस क्या खत्म कर दिया कि तुम्हें खुद से मेहनत नहीं करनी। तुम क्लास गए, तुम लिटरली नोट्स बनाओ, और वो नोट्स आर द एंड ऑफ स्टोरी। कि मेरे को बैठ के रोज एक दिन 2 वीडियो देखनी है, और उस वीडियो के बीच में मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल ना आए या मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल ना आए या मम्मा की कोई बात काम ना करना पड़े, खत्म। 9 to 5 क्लास है, 9 to 6 क्लास है, मैं क्लास गया, 3 दिन क्लास गया, मेरा वो सब्जेक्ट खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल आई टेक पीडियाट्रिक्स, व्हेन आई टेक पीडियाट्रिक्स इन ऑफलाइन, आई टेक इट ओवर 3 days, राइट? तो फ्राइडे सैटरडे संडे, एंड आई कम टू कोलकाता ऑल्सो फॉर दैट मैटर। तो द क्लास वाज ऑन फ्राइडे सैटरडे संडे एंड डन। तुम्हारी पीडियाट्रिक्स खत्म। एंड द ऑफलाइन में जितना पढ़ाया, दैट्स आई वुड से दैट्स 80% एनफ फॉर योर प्रोफेशनल एग्जाम्स ऑल्सो। कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स आपको आसपास से थोड़े बहुत कहीं से पढ़ने पड़ेंगे, बट मोर और लेस अराउंड इट्स 80% एनफ फॉर योर प्रोफ एग्जाम्स ऑल्सो। सो ऑफलाइन का वो बहुत बड़ा एडवांटेज है, आई अंडरस्टैंड दैट ऑफलाइन कम्स विद द कॉस्ट ऑल्सो, बट वो कॉस्ट वो इसलिए ही चार्ज कर रहे हैं। So if you're taking Maro for 1 year or DBM say one for 1 year, that will cost you around 35,000 rupees. While let's say you take an offline platform, तो वो for 2 years it is 70,000। तो मुझे तो कभी कभी लगता है कॉस्ट भी सेम ही है। इट्स नॉट लाइक कि कॉस्ट में भी कोई बहुत ज्यादा फर्क है। ऑफलाइन genuinely is as a from a preparation point of view, I'll be very honest, offline is better. Alright, from a preparation point of view, offline is better because it takes away the headache of yours कि मेरे को वीडियो देखनी है, फिर मेरे को वीडियो से नोट्स बनाने हैं, फिर उस वीडियो से मेरे को नोट्स को कंसाइज करना है, फिर मैं रिवाइज कैसे करूंगा, फिर मैं क्यू बैंक कैसे सॉल्व करूंगा, ये सारा झंझट ऑफलाइन में खत्म हो जाता है। क्लास में जाना है, क्लास में जो नोट्स बने वो वैसे ऑलरेडी कंसाइज होंगे, दे वोंट बी टू लॉन्ग, दे विल बी कंसाइज, उनको ही पढ़ना है। दोस्त दैट प्लेटफॉर्म इटसेल्फ विल गिव यू अ टेस्ट एंड डिस्कशन लेटर ऑन, एंड उसी टेस्ट एंड डिस्कशन में तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जीटीसी मिलते रहेंगे, डन। तो एक तरीके से वो तुम्हारी बहुत बहुत ही टाइट हैंड होल्डिंग करता है ऑफलाइन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? दैट इट इज सो। इससे मैं एक सिंपल बोल रहा हूँ, थिंक अबाउट योर सेल्फ वेदर यू आर अ डेडिकेटेड पर्सन और नॉट। इफ यू फील कि हाँ मैं डेडिकेटेड हूँ, कि मैं खुद रोज आके पढ़ लूंगा 2,
आई प्लान अ शेड्यूल माई सेल्फ, इस दिन ये करूंगा, इस दिन ये करूंगा. इफ यू फील यू आर डेडिकेटेड, यू फील यू आर अ टॉपर, मैं सिंपली ये बोलता हूँ, टॉपर्स शुड टेक, इफ यू फील यू आर अ टॉपर, यू शुड टेक एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. इफ यू फील यू आर एवरेज हु वांट्स टू गेट थ्रू, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, गो फॉर ऑफलाइन. If you feel you are a topper who has all the utmost dedication, you should take online because it gives you the freedom. But if you think कि नहीं यार, मतलब ये कि कौन मुझे ये करे, ये कैसे करे, ये भाई हमसे ना हो पाएगा, तो सारी वो झंझट उनको दे दो. वो झंझट देने के तुमने 15-20 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, बट आई थिंक दैट 15-20 थाउजेंड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years इज वर्थ इट. राइट? तो थिंक अबाउट कि आप बहुत डेडिकेटेड हो तो ऑनलाइन बेटर है. अगर आपको लगता है नहीं यार वो डेडिकेशन मेरे में नहीं है, तो वो खरीद लो वो डेडिकेशन ऑफलाइन से. दिस इज व्हाट आई विल से. Okay, so one question that we have received is um ये दो को मैं कंबाइन कर देता हूँ तो फिर भैया एक क्वेश्चन है हाउ टू बैलेंस नीट पीजी विद क्लिनिक्स एंड प्रॉफ, दैट इज वन. एंड द अदर वन सिमिलर इज लाइक हाउ टू मैनेज प्रॉफ स्टडीज एंड like during professional exams what exactly should तो be मैं the वही मैं strategy. बताने वाला हूँ. सो बेसिकली एज फार एज प्रोफेशनल एग्जाम्स इज कंसर्न, I'm like I said in the beginning of the webinar also, like my strategy always used to be very very simple कि मैं अपना बता देता हूँ हाउ आई यूज्ड टू डू इट, एंड दैट्स हाउ यू कैन मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ. तो हमारे यहाँ पे जो वार्ड लीव्स होती थी, आई लाइक आई सेड, मैं वार्ड लीव्स में ठीक कर रहा था, बट मैं वार्ड लीव्स को 3 दिन देता था. आई बी लाइक वेरी ऑनेस्ट, आई यूज्ड टू गिव 3 dedicated days टू वार्ड लीव्स. तो अगर 20 डेज की 20 डेज की पोस्टिंग है या 45 डेज की पोस्टिंग, आई यूज्ड टू बी रेगुलर विद द पोस्टिंग. रोज जरूर जाता था, ऐसा नहीं है कि कोई स्किप करता था. वहाँ पे उस समय जो पढ़ना है उन 3 घंटे में जिनसे डेडिकेटेडली पढ़ना है वो पढ़ता था. एंड वो पैसिव लर्निंग उस समय होती रहती थी. इट्स नॉट लाइक कि वो नहीं होती रहती थी, राइट? दैट पैसिव लर्निंग यूज्ड टू हैपन. एंड जब वार्ड लीव का टाइम आता था, उस एक हफ्ते में 3 दिन जेन्युइनली प्रॉपर डेडिकेटेड 3-4 डेज बैठ के मैं उस वार्ड लीव के लिए पढ़ता था फॉर 3 to 4 days, नॉट मोर देन दैट, एंड यूज टू गिव दैट वार्ड लीव. पर उस उन 3-4 दिन से पहले और उन 3-4 दिन के बाद माई ऑलवेज फोकस यूज टू बी ऑन द सब्जेक्ट्स विच आर इन दैट पर्टिकुलर प्रॉफ. तो अगर पाथ फार्मा माइक्रो चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में अभी आता है, मेरे को अपना 4 सेमेस्टर का एंड सेम याद आ रहा है. तो मुझे याद है कि एग्जाम जो थे वो शुरू होने वाले थे और उसे एक हफ्ते पहले ही वार्ड लीव थी. तो लोगों की फट लेती है कि मैं किसके लिए पढ़ूं. तो फॉर मी इट नेवर वाज अ प्रॉब्लम. जिस दिन से मेरे एग्जाम्स खत्म हुए, मतलब जब मिड सेम खत्म हुए थे ना, एंड सेम की मैं बात कर रहा हूँ, तो मिड सेम जब से खत्म हुए थे, मैं अपने एंड सेम के लिए ही पढ़ रहा था. आई वाज स्टडिंग पाथ ओनली, आई वाज स्टडिंग माय फार्मा ओनली, आई वाज स्टडिंग माय माइक्रो ओनली. आई वाज नॉट स्टडिंग मेडिसिन, लाइक नॉट एट ऑल पर स्टडिंग मेडिसिन या पीज सी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पीज मेडिसिन वो कुछ नहीं पढ़ रहा था. पर जाता था हर रोज, यूज टू गो टू दैट वार्ड, मतलब यूज टू गो फॉर द पोस्टिंग. एंड जब वार्ड लीव का टाइम आया कि अच्छा आज सैटरडे को वार्ड लीव है, तो ट्यूसडे के एंड से या वेडनेसडे से मैंने उन 3 दिन, वो 3 दिन मैंने दे दिए थे वार्ड लीव को. उन 3 दिन मैंने पाथफार्मा माइक्रो नहीं पढ़ी. या अगर मैंने पढ़ी भी होगी तो फिर मैंने कैसे किया होगा कि उसमें अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, तो अगर कुछ पाथफार्मा माइक्रो का कुछ कोरिलेशन है तो हल्का सा मैंने रिवाइज मार लिया, बट नथिंग बियॉन्ड दैट. पर उन 3 दिन लगातार मैंने डेडिकेटेडली आई गेव टू वर्ड लीव एंड गेव द वर्ड लीव. एंड आई पर्सनली फील फॉर वर्ड लीव्स 3 days आर एक्चुअली मोर देन एनफ. लोग तो एक दिन में भी पास होते हैं यार, बट आई पर्सनली फील 3 days अगर तुम दे दोगे, इफ यू रीड प्रॉपरली फॉर 3 days योर हचिंसन और मैक्लिओइड्स, आई एम प्रीटी श्योर यू विल इनफैक्ट टॉप. वो तो कंपार्टमेंटलाइज करके उन 3 दिन को दे दो फॉर योर वर्ड लीव्स. बी रेगुलर विद योर वर्ड्स. इफ यू आर रेगुलर विद योर वर्ड्स, so passively you learn a lot, and give 3 days, 3 active days to those word leaves, and you will get done with the word leaves. Baki time study what is the actual subject of that prof. Path Pharma Micro, ENT, Optha, PSM, like that. Coming to the final year में, like I said, फाइनल ईयर में दोज वर्डलीज एंड दोज पोस्टिंग्स आर द टाइम फ्रेम्स दैट यू हैव टू कंप्लीट दैट सब्जेक्ट. कि आज मेरा मेडिसिन चल रहा है, मैं मेडिसिन खत्म करूंगा इस एक महीने में. मेरी एक से एक महीने सर्जरी चल रही है, इस एक महीने में आई हैव टू गेट डन डेली. आई विल डेली स्पेंड, देखो फाइनल ईयर इज वन टाइम आई वुड से यू हैव टू गेट डेडिकेटेड एंड यू हैव टू स्टडी ऑन अ डेली बेसिस फॉर 4 to 5 hours. 4 hours तो डेली पढ़ना है. तो मैं डेली रोज के 4 hours आई वुड स्टडी डेली, और आई वुड वॉच 2 hours ऑफ वीडियोस एंड आई वुड स्टडी बेली फॉर 2-3 hours. पर उस एक महीने में मेरे को बेली खत्म करनी है. 1-1.5 month में मेरे को बेली खत्म, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बेली. अ लॉट ऑफ पीपल से व्हेन दे रीड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, लॉट ऑफ पीपल टेंड टू थिंक कि सब लोग जैसे मैंने भी, पीपल माइट थिंक दैट मैंने भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फर्स्ट वर्ड से लास्ट वर्ड तक पढ़ी है. नहीं, कोई नहीं पढ़ता, वैसे भी कोई नहीं पढ़ रहा था. आप इंपॉर्टेंट प्रीवियस टॉपिक्स की भी अगर आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को पढ़ लोगे, दैट्स मोर देन एनफ. मेरी रॉबिन्स भी फॉर एग्जांपल, द ओनली बुक आई से वुड से जो मैंने फर्स्ट वर्ड से लास्ट वर्ड तक पढ़ी है इज रॉबिन्स. बट इसके अलावा मैंने सब स्टैंडर्ड टेक्स्ट पढ़ी हैं. आई हैव रेड बेली, आई हैव रेड केडीटी, एंड आई हैव रेड
Harper and everything. But to think that I have read all those textbooks from first word to last word is, I won't say that. कोई नहीं करता, मैंने भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया, कोई टॉपर नहीं कर रहा होता. आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही उनसे पढ़ रहे होते, सो दैट योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिकम्स बेटर ऑफ दोस टॉपिक्स. बाकी टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े या नहीं पढ़े, दैट्स परफेक्टली फाइन. बट आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ो. आई एम नॉट सेइंग दैट यू डोंट नीड टू डू दो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स फॉर दैट. बट उस एक महीने या 1.5 महीने में पढ़ो. A lot of people tend to get overwhelmed by the fact कि एक महीने में मैं हैरिसन कैसे पढ़ूंगा. That overwhelming, I'm getting overwhelmed with that fact कि मैं 1.5 month में हैरिसन कैसे पढ़ूंगा is genuine. No, and let me be very honest about that. Nobody reads Harrison in 1.5 month. Even if you do the most important topics of Harrison, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम coronary syndromes, acute coronary syndrome कर लो, तुम stroke कर लो, IBD कर लो, asthma कर लो, इन important topics की भी Harrison if you read. एंड जो माइनर टॉपिक्स हैं उनको तुमने नोट से ही पढ़ लिया या मैरो से ही कर लिया या डीबीएम से ही कर लिया, फाइन, दैट्स परफेक्टली फाइन. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स यू कैन रीड, एंड रेस्ट यू स्मॉल टॉपिक्स यू कैन डू फ्रॉम अदर टॉपिक्स ऑल्सो. नोबडी डज दैट. मतलब और कोई कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, और जो कर रहा है उसकी कोई अच्छी रैंक नहीं आई है, उसमें मैं फिर एरोगेंट होकर बोल देता हूँ कोई जरूरत नहीं है उतनी करने की, आराम से चिल मारो, लाइफ जियो, है ना. तो डोंट बी कि मेरे को पूरी हैरिसन फर्स्ट वर्ड से लास्ट वर्ड तक एक महीने के अंदर पढ़नी है, ऐसा नहीं करना, किसी को नहीं करना. रीड द टेक्स्ट बुक्स, यस डेफिनेटली रीड द टेक्स्ट बुक्स, बट डोंट बी लाइक कि मेरे को पूरी वन वर्ड से लास्ट वर्ड तक उसको खत्म करना है, समथिंग लाइक दैट. एंजॉय लाइफ, लाइक आई सेड, लाइफ को एंजॉय साथ में करना है. तो आप थर्ड प्रॉफ तक आपको लाइक थर्ड ईयर के एंड तक आप और यू हैव टू डू इज, आप वॉर्ड लीव को 3-4 दिन ही देने वाले, उससे ज्यादा नहीं देने वाले. फाइनल प्रॉफ में दैट वॉर्ड लीव बिकम्स अ टाइम टू फिनिश दैट सब्जेक्ट, एंड दैट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजी. अच्छा, I think एक ही question I can see which is kind of different. Most of them are similar in much of the way. A question is, sir, can you please give a brief about surgery as a branch, especially for a female? Your insight. So I personally feel that like my personal insight is surgery is not going to go anywhere. In fact, one of the branches which will be always be future proof from AI is surgery. So if that is your consideration, so that is always going to be there. मतलब मैं एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ to anyone else कि although you guys are doing this pros and cons of every branch, यार कल जब like a lot of people end up saying it, I'll be very honest, a lot of people say optha बहुत saturated. I'm pretty sure guys must have heard this. Even at this point on time, you guys must have heard that about this optha बहुत saturated है. कल मेरे को यार चोट लगी थी यहाँ पे, like I fell down from in my house, hit my head on something. तो ये यहाँ पे जब मैं यहाँ पे जो चोट लगी थी, तब मैं रैंक 1 और AIR 1 रेडियोलॉजी के पास गया था कि मेरी स्टिच कर दो, है ना. नहीं ना. नो ब्रांच इज गोइंग टू गो आउट ऑफ फैशन, ऐसे एटलीस्ट द क्लिनिकल ब्रांचेस में तो कोई सैचुरेशन कभी नहीं आने वाली, स्पेशली हमारी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से तो कभी नहीं आने वाली. I went to an ophthalmologist. I went to the casualty, RPC casualty, मतलब ophtha की casualty क्या था. That person is the one who saw me. That person is the one who stitched me. That is the person who prescribed me the antibiotics, right? The antibiotic cream and everything. So what I'm basically trying to tell you is that pros and cons is good. वो आप pros and cons आप इस चीज से देखना कि वो आपको कितना सूट करती है ना. सो इफ यू आर समवन हु इज वेरी पैशनेट अबाउट सर्जरी, कि यार वो इफ यू हैव बीन टू एन ओटी फॉर एग्जांपल, एंड वो जैसे कई लोगों को ना, वन ऑफ माय बैच में जिसने सर्जरी ली थी, ही सेड कि यार वो ऑर्गन जब हाथ में पकड़े थे ना, खून में जब लपटा था मेरा वो ग्लव, तो एक अलग ही हाई आया था. सो इफ यू आर समवन हु फील्स दैट हाई, तो गो फॉर इट यार. then you won't get happiness in anything else. For example, मुझे वो हाई हर बार आता था when I used to make a diagnosis. So for me it was always clear I have to take a diagnostic branch, right? मेरे को सर्जरी की ओटी में जाके बोरिंग ही लगता था. इवन व्हेन आई स्क्रब्ड इन एंड एवरीथिंग, मेरे को लग रहा था ठीक है कोई और करे, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता था. आई डिड नॉट लाइक दैट. Everyone has a different aptitude, right? So if you're someone who go to an OT, go to a minor OT, and whenever your surgery posting is, go to either minor OT or go to a major OT, scrub in, ask them to scrub in at least once, see the surgery, and feel it a little bit, and you feel कि this is something which I मतलब अच्छा लगता है, then go for it. And as far as the female part is concerned, that thing is probably was valid 10 years or 20 years, to be honest. अब नहीं है. ऑर्थो के लिए अभी भी मैं कह सकता हूँ having being a female might have been a little bit of disadvantage, but surgery में that thing has gone. सर्जरी में that thing has gone. वो चीज़ बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है सर्जरी में at this point of time कि females are at a disadvantage or something like that. No, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है. Like in 2024 that is gone. That thing was valid in 2010 and 11. Like I remember जब मैंने अपनी MBBS ज्वाइन की थी, when I joined MBBS in 2012,
At that point of time, that used to be a part of discussion, and I've seen that discussion getting drowned out and being absolutely moot by the time 2016, 17, 18 came. I saw that even at AIMS, how 50% of the people who ended up taking surgery were females only. So that thing was, matlab, let's not live in past. Female part for surgery is absolutely moot point. If you're someone who likes that passion, has that passion for surgery, go for it. Okay, so नीट पीजी से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस हैं. um there is a question regarding, right, so what should students expect during a pediatrics residency in terms of workload and learning curve? All right. So, I personally feel that pediatrics residency 3 years is actually more than enough to learn most of the skills. So, as a pediatrician, your skill set should be that a dying child should not die in front of you. And what I mean is that your emergency skill set should be strong, which basically means you should be strong enough to intubate a child, to put a central line in a child, and if it's a neonate, to put an umbilical venous catheter, UVC in that catheter, and put an IV line in child. IV line in a catheter in a child or a cannula in a child is also a skill. These are the four skills I will talk about: putting a cannula in a child, putting a central line in a child, putting intubating a child, and putting a umbilical venous catheter, UVC and UAC in a child. Neonates के case में, because neonates only the children, your pediatricians are going to look at. No adult guys ever going to look at that. Apart from these, there are some additional skills which I would say are, if you know them, they are better. So, if you know, let's say how to do a bone marrow, do a lumbar puncture, ये आने चाहिए. लंबा पंक्चर बोन मारो तो आना ही चाहिए आपको, आइडियली होना चाहिए. But I know that there are places where you don't end up doing a lot of bone marrows. So even if you don't know bone marrow, that's fine, because pathologists can always take care of. You should know how to do a lumbar puncture. You should always know how to do a cytic tap or a pleural tap. Mote mote, these 7 8 skills which you should know. Now it's up to you how much time you want to take to learn these skills. If you learn these skills in 3 years of residency, that 3 years of residency is more than enough. If someone has asked me, I saw that, someone has asked me that, should I join a hospital to learn these skills and then take a private practice? So I would say that if you feel confident years of residency, then there is no need to do a job, to be very honest. If you feel कि अभी नहीं हुए मेरे skills उतने practice, I've not learned those skills and I don't have that much of confidence in those 3 years of residency, then sure, then you take up a job as an SR in some other hospital and learn those skills. But I personally feel that when you have learned these 7 8 skills, after which you are confident, after which you should not, you can venture out into private practice. After that, a job is not required. These 6 7 8 skills: intubation, central line, pleural and a cytic tap, lumbar puncture, bone marrow. For these set of 7 8 skills, when you have learned, if you've learned it in the first year of residency, or you're learning it after residency, doing a SRship after 1 or 2 years. For example, like being honest with you guys, मेरी central line जो central line का जो मेरे को skill लगता है, मेरा skill है, I personally feel I learned it better during my SRship, during my DM training. उसके फर्स्ट ईयर में that's when I really became confident in putting a central line. Intubation, UAC, UEC मैं and residency में सीख चुका था, but central line मेरे को थोड़ा सा लगता था, which I got. तो when you feel confident about these 7 8 skills, that's when you can easily venture out. That depends upon, you can get confident within the first 3 years of residency, या फिर 1 2 साल job कर लो. That's about it. Okay, so multiple questions, like I think throughout the meeting, were uh, about starting the NEET PG preparation from the third year, which is the correct coaching to choose. And one of the questions which I think two or three people also asked, which I will merge with this, is if we are like preparing for an international exam, let's say USMLE or plan. So what are the coachings or what are the sources that we should more focus on? So ये दो, I'll just merge these. I think like towards the end ये वाला question है क्या? Yeah, sure. So, NEET PG के केस में तो बहुत ही simple है यार. Like, I'll be very honest about you with this as far as NEET PG is concerned. USMLE वाला question मैं थोड़ा बाद में लूंगा, for that matter. And frankly, USMLE वाला question मैं लूंगा नहीं यार. मैंने किया है. It's not like I did not do USMLE and everything, but I personally क्यों बोलूं, to be very honest, है ना. तो NEET PG के केस में पहले तो ये डिसाइड करो, like I said, decide whether what kind of student you are, whether you're a dedicated student or you're not a dedicated student. तो पहले तो ये डिसाइड करो कि ऑनलाइन लेना है, ऑफलाइन लेना है. पहले तो सिंपल ये डिसाइड करो, ठीक है. तो ऑफलाइन लेना है तो ऑब्वियसली मैं बोलूंगा भाटिया ज्वाइन करो, ठीक है. मैं तो नहीं बोलूंगा डैम्स ज्वाइन करो, ठीक है. बट हैविंग सेड दैट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, इट्स अप टू यू, ठीक है.
अगर इफ यू आर, आई विल से पीपल विल बी इक्वल 50-50। लाइक आजकल ट्रेंड बहुत ऑनलाइन का बना हुआ है, बट आई फील दैट जो 80-20 हुआ है, 80% ऑनलाइन एंड 20% ऑफलाइन, आई वुड से दैट इट शुड रिवर्स बैक अ लिटिल बिट टू 50-50. Have a hard, honest conversation with you, what kind of student you are. And see, 80% students कैन नॉट बी डेडिकेटेड, फिर तो डेडिकेशन का वर्ड ही मतलब खत्म हो गया. 20% स्टूडेंट्स कैन बी डेडिकेटेड, 30-40% स्टूडेंट्स कैन बी डेडिकेटेड. राइट, इफ यू फील यू आर समवन हु इज अ डेडिकेटेड स्टूडेंट, then join an online platform, think of an online platform. Alright, if you're someone who feels that I am not a dedicated student, मेरे को चाहिए यार कोई मेरे को थोड़ा सा लट मारता रहे, keeps me on the toes and everything, and have a honest conversation. Like this is a very important. Don't think of yourself कि नहीं मैं तो हूँ dedicated, मैं तो हूँ ऑल इंडिया रैंक वन. नहीं यार, आप खुद को सोचो, है ना. एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं अपने थर्ड ईयर में वापस जाऊँ तो मैं शायद ऑफलाइन प्लेटफॉर्म ही चूज करता. मुझे था कि अगर एंट्रेंस निकालना है तो आई नीड, लाइक मैंने टेस्ट एंड डिस्कशन ज्वाइन किया था. मुझे द रीजन आई ज्वाइन टेस्ट एंड डिस्कशन एंड इंटर्नशिप वाज बिकॉज आई न्यू दैट एटलीस्ट इट विल गिव मी दैट वन वीकली शेड्यूल कि इस हफ्ते में कोई एटलीस्ट ये टॉपिक्स खत्म करने हैं. वो कोई और नहीं देता तो शायद मैं तो फिर रैंडमली कुछ भी पढ़ रहा होता. राइट, देयर वुड हैव नॉट बीन एनी शेड्यूल, देयर वुड हैव नॉट बीन एनी semblance टू व्हाट इज द प्रिपरेशन गोइंग टू बी लाइक. सो हैव अ ऑनेस्ट हार्ड कन्वर्सेशन विच कैटेगरी यू बिलोंग टू. सो फर्स्ट डिसाइड कि ऑफलाइन जाना है ऑनलाइन जाना है. ऑफलाइन जाना है तो देन ठीक है, अपने सीनियर से पूछो तुम्हारे कॉलेज में जो ट्रेंड चल रहा है, भाटिया का ट्रेंड चल रहा है, भाटिया जाओ. डांस का चल रहा है, डांस जाओ. दैट्स परफेक्टली फाइन, दैट्स परफेक्टली वन. हाँ, क्योंकि मैं भाटिया का टीचर हूँ तो आई विल से इट ऑन लॉर्ड ऑन प्लीज ज्वाइन भाटिया. बट अदरवाइज ऑल्सो डांस भी कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. बोथ आर इक्वली गुड प्लेटफॉर्म्स, बोथ आर इक्वली गुड प्लेटफॉर्म्स. राइट, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. द अदर पार्ट कम्स इज दैट कि ऑनलाइन में कौन सा ज्वाइन करना है. तो अगेन, platform wise, being very honest with you, UI wise best is Maro. Okay, there is no doubt about that, I won't deny that. Ab DBM say now has been taken up by Maro, so I would say DBM say one also uska bhi UI is as good as Maro, so you can consider that as well. There's no doubt about that. If you are someone uh, इसके अलावा, but if you feel that you have a particular preference for particular teachers, for example, a lot of people like Dr. Deepak Marwar a lot, right? A lot of people like Dr. Preeti Sharma a lot. In that case, you can take prep ladder. Again, the platform doesn't matter. ठीक है, इसमें देयर इज नो कि ये प्लेटफॉर्म बेटर है या वो प्लेटफॉर्म बेटर है, ऐसा कुछ नहीं है. द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शुड बी वेरी सिंपल, दैट यू शुड ट्राई टू वॉच, नॉट वॉच, you should have notes of the 19 subjects. The entire game boils down to notes of 19 subjects. And when I say notes, I don't talk about the textbooks that are given with these online platforms. Okay, जो तुमको नोट्स मिलते हैं या मेरे भी नोट्स मिलेंगे फॉर दैट मैटर ऑफ, वो टेक्स्ट बुक्स हैं, वो नोट्स नहीं है. दोज आर नॉट नोट्स. ओके, दो आर टेक्स्ट बुक्स. ठीक है. लोग कहते हैं नोट्स पढ़ने हैं, हाँ तो फिर उसी समय 10,000 पन्ने के नोट्स ऑर्डर कर देते हैं, चाहे मारो के, प्रेपलाडर, डाम से, भाटिया, जिसके भी हैं फॉर दैट मैटर. अब हम ये करेंगे. अरे वो नोट्स नहीं है बंधु, वो टेक्स्ट बुक है. ठीक है. नोट्स, द वेरी डेफिनेशन ऑफ नोट मीन्स दैट यू हैव नोटेड इट डाउन, दैट यू हैव रिटन इट डाउन, और यू हैव डन इट. तो 19 सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि 7,000 रुपये दे के नोट्स खरीद लिए मैंने. उसका मतलब ये है कि तुमने नोट्स बनाए. योर गोल इफ यू आर डूइंग फ्रॉम एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रॉम थर्ड ईयर इज कि विच एवर शेड्यूल यू वांट टू फॉलो, कि अगर लेट्स से एटलीस्ट इन द व्हाट मोस्ट पीपल यूज्ड टू डू वाज, वो जो सिंपल मैं बताना चाह रहा होता हूँ, थर्ड ईयर में थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स इनको कर लो. थर्ड ईयर में थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स कर लो. माइनर कुछ एक दो कर लो. फाइनल ईयर में फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स कर लो, और फर्स्ट सेकेंड प्रॉफ के सब्जेक्ट्स कर लो. इनकी वीडियोस देख लो एंड मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स. और अगर कोई नोट्स दूसरे खरीदे भी हुए हैं तो साइमल्टेनियसली उन नोट्स को छोटा कर लो. योर गोल इन थर्ड एंड फोर्थ ईयर शुड बी कि मैंने एक बार चीजें पढ़ ली और मैंने खुद के नोट्स बना लिए. या तो मैंने खुद से लिख लिए, या जो इतने मोटे मोटे मेरे को जो ग्रंथ मिले हुए हैं, जिनको नोट्स बोला जाता है, वो नोट्स तो है नहीं, वो ग्रंथ ही है मेरे हिसाब से, उनको मैंने छोटा कर दिया है. यार अगर तुम्हें मेडिसिन की 3 वॉल्यूम इतनी मिल रही हैं तो मुझे तुम इनको नोट्स बोलोगे, मतलब शर्म आती है मेरे को, लोग इनको नोट्स बोलते हैं तो पहले तो योर गोल शुड बी कि वो जो इतना मोटा है, या तो मैं काट ही दूं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, या ये चीज पीजी के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रॉफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉफ के लिए इंपॉर्टेंट है, पीजी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. Ideally, you should make your own set of one notebook of 200 to 300 pages of every subject. ये मेहनत तुम्हारी है. जेन्युइनली यही तुम्हारी मेहनत है. जो लोग कहते हैं ना मेहनत की हमने, वी वर्कड हार्ड टू गेट अ नीट पीजी रैंक, दिस इज द एफर्ट दैट दे टॉक अबाउट इन द थर्ड एंड फोर्थ ईयर. द एफर्ट एंड of notes, these own notebooks,
एंड उसके बाद तो बहुत ही आसान है। ये मेहनत अगर फाइनल ईयर के एंड तक कर लोगे तो इंटर्नशिप में सिर्फ इन नोट्स के ही रट्टे मारने हैं बार बार। Whenever and whichever time that you get, 3 years, 3 hours, 4 hours, 2 hours, 3 hours, but whatever time that you get during an internship after your 6, 7 o'clock, just keep on revising these notes again and again and again. Content wise, you're sorted. And internship में now the concept of practice, the MCQ practice. अब आप प्रीवियस क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करो। अब आप जीटीज हर 3 या 4 हफ्ते में दो। और अब आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके क्यू बैंक मॉड्यूल सॉल्व करो। दैट्स थर्ड फोर्थ ईयर का काम ये है कि आपने कंटेंट बना लिया। कंटेंट बनाने का मतलब आई अगेन री एम्फसाइज, इट्स नॉट बाइंग 7,000 10,000 पेजेस ऑफ नोट्स, इट्स सीइंग दोज वीडियोस और गोइंग टू एन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म एंड मेकिंग योर ओन सेट ऑफ वन नोटबुक फॉर ईच सब्जेक्ट। आपके जो एक्चुअल सेट ऑफ नोट्स जो रिवाइजेबल हैं दे शुड बी टोटली अराउंड 3,000 पेजेस। दैट्स द अपर लिमिट, अराउंड 3,000 पेजेस, राइट? इट कैन नॉट बी 10,000 पेजेस। आपने वो बना लिए, जैसे भी बनाए फाइनल ईयर तक आप वो बना लो। इफ नॉट ऑल द 19 सब्जेक्ट्स, नोबडी डज ऑल 19 सब्जेक्ट्स, आप 12 से 14 सब्जेक्ट्स के तो बना लो। 50%, 70% ऑफ द सिलेबस यू कैन डू बाय एंड ऑफ फाइनल ईयर। इंटर्नशिप में द गोल इज टू रिवाइज दोज नोट्स एंड नाउ गेट इनटू द एमसीक्यू प्रैक्टिस ग्रुप। कि एवरी थर्ड फोर्थ वीक आई एम गिविंग अ जीटी, you know I'm practicing previous year questions, 1 hour of MCQ practice on a daily basis, previous year question and important topic modules on a daily basis, and simultaneously revising the notes. पर पहली बार वो नोट्स रिवाइज करने में 3 या 4 महीने लगेंगे, फिर 2 महीने लगेंगे, फिर 1 महीना लगेगा, फिर एक आखिरी 10 दिन में रिवाइज करके दो देगा। दैट्स इट, दैट्स हाउ इट शुड बी। So I think it kind of also answers the question on when should I start the final year I prep would in say, third I'd year or say second. third prof. I personally feel first, second prof should all be about building your concepts. आप पढ़ो रॉबिन्स, आप पढ़ो ग्रे, हापर या लिपिनकॉट, try to read KDT, try to read Ganong or Guyton, whatever it is. Please first, second prof. I genuinely feel like मैं this में लड़, और थर्ड प्रॉफ में लेनी है। फर्स्ट सेकंड प्रॉफ में नहीं लेनी और थर्ड प्रॉफ में लेनी है। एटलीस्ट थर्ड, इफ नॉट थर्ड प्रॉफ, तो एंड ऑफ थर्ड प्रॉफ या फाइनल प्रॉफ तक तो ले लेनी है। एंड मिडल ऑफ थर्ड प्रॉफ या बिगिनिंग ऑफ फाइनल प्रॉफ तक तो ले लेनी है। उसके बाद तो जेन्युइनली फिर हाँ वो फिर तुम प्रिपरेशन डिले ही कर रहे हो। उसको मैं नहीं कहूंगा। बट फर्स्ट सेकंड प्रॉफ में देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू टेक एनी सब्सक्रिप्शन और समथिंग लाइक दैट। बेटर दैट यू बिल्ड अप योर ओन कंसेप्ट्स। अगर तुम्हें लगता है कि कोई कंसेप्ट मेरे को समझ नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ पीपल टेक वीडियोस टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, आई वुड से दैट यार YouTube has so many so good videos. If you don't understand particular topic, तुमने आज रॉबिन्स पढ़ी, तुमने जैसे मेटास्टासिस पढ़, तुमने आज न्यूप्लेजिया पढ़ा रॉबिन्स में फॉर दैट मैटर, तो शुरुआत में तुम्हें समझ में आया, पर जैसे जैसे तुम मेटास्टासिस पे पहुंचे तुम्हें समझ नहीं आया कि ये कहाँ से निकल के क्या क्या हो रहा है, ये क्या हुआ है। सो लिटरली यू पुट ऑन यूट्यूब एक्सप्लेन मेटास्टासिस रॉबिन्स, यू विल फाइंड सम वीडियो। व्हाई डू यू वांट टू स्पेंड मनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? तो फर्स्ट सेकंड ईयर में मनी बचा लो, यूज इट फॉर टू बाय एन आईपैड, आई वुड से दैट वुड बी अ बेटर वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट। एंड इन फाइनल ईयर एंड इन थर्ड ईयर आई वुड से यस, देन टेक अ हार्ड डिसीजन विद योरसेल्फ। ऑफलाइन जाना है, ऑनलाइन जाना है, ऑनलाइन जाना है तो मैरो obviously is a better one out of this, no doubts about that. But use Maro in a way that it, लोग मैरो को यूज करना ही नहीं जानते, मुझे तो ये लगता है इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म एंड दे यूज इट इन द मोस्ट हॉरिबल वे पॉसिबल। ओके, कि हम लोग सारी 19 सब्जेक्ट की सारी फर्म डे वन टू लास्ट डे वीडियो देखेंगे, वो 10,000 पन्ने को रटने की कोशिश करेंगे, नहीं हो पाएगा यार। कोई उतना इंटेलिजेंट नहीं है। be smart enough to use those platforms, be it Maro or Prepladder for that matter of fact, whichever platform it is. Be smart enough to use that platform. Make your own set of notes which you can revise later at a later point of time, right? That's about it. Um, I guess सारे questions give or take हुए हैं. I'm looking through them once more. USMLE covered, note making Basically I would covered. say यार कि better to talk to someone who's actually been through that process, क्योंकि मैं, मेरी advice would be a secondary advice, किसी और के कहे से मैं क्या बताऊं। I will not do justice to that topic. So I think give or take we are sort of at the end of this session. I have sent a link, guys, for anyone who has to get the certificates for this. I have a link in the chat box. You can go to that form. And there's a question, sir, should we read Ghai after watching your videos? If you want to take that as the last question. I would say घई पढ़नी है, मैं बता देता हूँ तो जनरल पीड्स के लिए घई पढ़ लेना साथ में थोड़ा बहुत। और systemic pediatrics can be covered with medicine and everything and all that, but for general pediatrics like neonatology हो गया for that matter, and
विटामिन मिनरल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले टॉपिक्स जो हैं उनमें घई एक बार व्हाट विल हैपन इफ यू लेट्स से यू वॉच माय वीडियोस, तो उसके बाद घई पढ़नी भी बहुत आसान हो जाएगी. यू विल बी एबल टू skim through it like a really fast at a much faster pace, right? So neonatology तो definitely I would recommend कि पढ़नी ही है घई से, definitely पढ़नी है. Systemic pediatrics I would say you can, it's a plus minus thing, that's upon you. A lot of it is also covered in medicine also, so वो वहाँ से भी हो जाएगा, तो that's a plus minus thing. But general and neonatology pediatrics की घई को after if you have done your videos, my videos, then you can easily skim through them and go through it. Yeah.